Good evening, everyone. Guys, it's my next video. Yes, sir. So, in our last discussion, we have already discussed functions and map and filter function, map and lambda function as well. So, our functions are completed. After that, from today onwards, we are going to discuss about the data structures in Python. Data structures means the data type which are going to hold more than one values at a time. So that is your list, set, tuple, dictionary, and string. So we are going to discuss all these data structures from now onwards. So first, I'm going to start with list. Coming to the list, what is list? It is also a collection of elements. List is a collection of dissimilar elements. And now, second point is what? List is a collection of dissimilar elements. That means if you want to store multiple elements as a single entity, then you are going to use list. List is represented by square bracket. Square. So if I can show you example of list, then you can say list one is equal to within a square bracket. Now inside this, you are having multiple elements. It can be any element. For I am taking Aman, Ram, then I am taking 10.5, then 10, then I am taking something like 4, false, 10 plus 20 G. So this is what? This is a list. Why it is a list? Because here I am trying to store multiple elements in a single variable. What is that single variable? This list one is your single variable. So all these multiple elements are going to be stored in a single variable, which is your list one. Okay. And if you are representing it in the form of a square bracket, that means it is a list. So list is always represented by square bracket. List is always represented by square bracket. Now, third point is list is mutable in nature. List is mutable in nature. Basically, mutable means changeable in nature. That means, suppose that I want to change Aman with some other name. For example, Sham. I want to change Aman with Sham. Can I do this? Yes, we can do. So mutable means changeable in nature. So once you are creating a list, you can perform changes in that. It is acceptable. We can. Okay. So this is nothing but your list. List is a collection of dissimilar elements. If you will see here, this is of a string type, this is of float type, this is of int type, this is of boolean type, this is of complex type. And I am trying to store all these elements into one single variable, that is list. So this is what? This is your list data structure. So here, if you will see, I have used square brackets. This square brackets represent that this is of which type? It is of list type. It is of list type. Now, after this, if I want to see the type of it, how we will see? For that, we are having one function named as type function. So inside this, if I am passing my variable name that is list, we will get the type of this. What is the type of this data structure? The type of this data structure is list type. So your answer will be class list because it is a list type data structure. Okay. So here, if you are representing multiple elements in square brackets, this is your square bracket. So I am trying to store multiple elements as a single entity, that is list one, in form of a square bracket. Then we are going to use this data type. Okay. So this is your list data type. Next point is how we can create empty list in Python. So how we can create an empty list. Okay.
So there are two ways to create an empty list. First way is you can simply write a square bracket. Now here it is a list, but it is a list with no element. No any element is present in this. So what is this? It is also a list with zero element. No any element is present. If I am going to check the type of it, the type of this is nothing but a list types. Type of this is what? It is of list type. List type. Okay. Same as it is, there is one more way to create an empty list, that is this function. Okay. That means if you are calling a list function, that is also nothing but your empty list only. So these are the two ways for creating empty list. So what is list? I want to store multiple elements in a single variable, that is list. I am going to use list. For list, it is mandatory that the brackets which is used is always a square bracket. A square bracket is mandatory. If I am not giving square bracket, then it is not a list. Okay. So a square bracket is necessary for representing it in the form of a list. After this, list is mutable in nature. That means changeable in nature. Changeable in nature means suppose that I have created this list. I want to add some element in this. Can I add that? Yes, you can add because list is changeable in nature. Okay. So if I can show you some example here, insert element in list. That means I will create one list. I will create one list and then I will add some element in. So for example, let me create one list here. 1, 2, 3, 4, 5, 6. This is what? This is your list. What I want to add some element. I want to add one element in this. So how we will add it? For that, in our list, there is one function that is known as append. So what this append will do? This append will add an element at the last position of the given list. Okay, so it will add the element at last position. So last position means 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. 6 is your last element. I want to add this 10. Where this 10 will be inserted? After 6. After 6, 10 will be inserted. So if I can show you my L value, see, your 10 will be added at last position. So if you want to add any element at last position, we are having append method of list. So basically this append, what this append is doing, this append, I am having a list. I want to add some element at the last position of this list. So for that, we are having append method. Okay. Same as it is, I want to add an element at the given index. Given index means, suppose that at first index. First index means this is zeroth index, this is first index. So at first index, I want to add some element. So how we will add that element? For that, we are having one method that is known as insert method. So in this insert, first you need to give the index at which position you want to insert the element. So position is first. I want to add an element at the first position. After this, what is the element value that you want to add? So I am giving something like 40. I want to add 40 as an element at first position. 40 as an element at first position. That's it. So if I am going to print my L value, you will see 40 will be added at first position. See, zero index, one index. At one index, your 40 will be added. At first index, your 40 will be added. Same as it is, if I want to add elements of another list into this existing list, what's the meaning of this? Suppose that I am having one more list, something like 10, 20, 30, 40. What is my requirement? I want to add all the elements of this list. I want to add all the element of this list into my original list, which is L. Okay. I want to add all the element of this list into my original list, that is L. So how we will do it? So for that, we are having extend function. L dot extend of L1. Okay. And if I am printing my L1 here, if I am printing my L1 here, L here, then you will see
This is my original list. In this original list, these are the elements which will be added in this. These are the elements which will be added in this list. See, 142, 3, 5, 6. After this, you will see 10, 20, 30, 40, 50 is added in your list, which is so these are the ways to insert elements into your list. I am having a list. I want to insert some element in this. How to perform that insertion? First, we are having append method. What append will do? Append will add an element at the last position. Whatever elements, whatever list is there, if you want to add an element at the last position, we are having append method. Next, we are having insert method. What insert method will do? It will insert an element at the given position. Whatever position you have given, at that position, your element will be inserted. And what extent will do? It will insert the element of the list. Insert the element of the list. Okay. Insert the element of the list into the original list. Original list. So these are the three methods we are having for inserting an element into list. So if you are having a list, you want to add some element, first function, first method we are having is append. What this method will do? This method will add an element at the last position of this list. Append will always add the element at the last position. Then we are having insert. What insert will do? Whatever element you want to insert, along with that, you can also mention the position of that element. At which position you want to add? I want to add at first position. And what is my element? 40 is my element. And third is your extend function. What this extend will do? This is my initial list. This is my initial list. What is my requirement? I want to add all the elements of L1 in your L list. जितने एलिमेंट इसके अंदर है सारे एलिमेंट हमको एल के अंदर ऐड करने हैं. So for that we are having extend function. What extend is doing here? Inserting the element of a list into the original list. So whatever list elements are there in this, all those elements will be inserted in your original list. So these are the insert methods which are there in list. If any question is there, please let me. Huh. Any type of question, if you guys are having, please let me. Any doubt, any question? Clear, guys, or not? Guys, please respond. Yes, Anna. Ask. If any doubt is there in these methods, please let me. Append will add at the last. हाँ सर, अभी से पाइथन में ही करा है मैंने. आपका शायद फर्स्ट है ये. पाइथन काफी दिन से चल रही है. ये सब पाइथन में ही कोड है. जितना कोड मैं कर रहा हूँ सब पाइथन में ही है. ठीक है. कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डिंग देख लेना. ठीक है. ये पाइथन में ये सब चीजें कवर हो चुकी है. प्रिंट क्या होता है, कैसे काम करता है, इवन लिस्ट भी मैंने बेसिक्स कवर किया है पहले. हाँ. एनी अदर क्वेश्चन और डाउट? एनी अदर क्वेश्चन और डाउट यू गाइस वांट टू आस्क, प्लीज लेट मी नो. कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हो. ओके, नो रिस्पॉन्स. फाइन, लेट्स मूव अहेड. So I am having a list. I want to perform deletion from this. That means whatever list is there, I want to delete some element from the given list. So can I perform deletion? Yes, we can perform deletion because list is mutable in nature. So basically mutable means once you are creating a list, you can perform changes in that.
So changes means you can delete an element, you can add an element, you can modify an element. All these things are acceptable. We can. Okay. तो हम लोग ऐड भी कर सकते हैं, हम लोग डिलीट भी कर सकते हैं, हम लोग मॉडिफाई भी कर सकते हैं. ऑल दीज थिंग्स आर एक्सेप्टेबल. वी कैन. So delete the element from the given list. That means this is my list. I want to delete something. So for that, we are having three methods. Let me tell you what are those. First is your L dot pop. Pop. What this function is doing, this function will delete the last element from the list. What is the meaning of this? If you are using only pop, what it will do, in this list, whatever last element is there, so last element is 6. So this 6 will be deleted from your list. So whatever last element is there from the list, that element will be deleted. See, 6 is deleted. So if you want to delete last element of the given list, for that we are having pop function. There is one variation of pop function is also there. That is, you can also pass the index as well. What is the meaning of this? If you are passing the index, then it will delete the element present in the given index. Given index. What is the meaning of this? Suppose that I want to delete this 3. My requirement is I want to delete this 3. So what is the index of 3? 0, 1, 2. At second index, 3 is present. So just write. Now what it will do, it will delete element which is present at second index. So if you are giving pop without any argument, in that case it will delete the last element. If you are giving the index value in a pop function, if you are giving the index value, then at this particular index, whatever element is present, that element will be deleted. So at second index, 0, 1, 2, at second index, our element which is present is 3. So that 3 will be deleted. See, your 3 has been deleted from the list. And one more function is there for deletion purpose, that is known as remove function. The remove function. What this remove will do? This remove will delete the given element. Delete the given element from the list. So whatever element I have given, only that element will be deleted. For example, I want to delete 5. 5 is what? 5 is not an index. What I want is, I want to delete this 5 value. This value I want to delete. So for that, we are having remove function. So if I am printing my L value, you will see your 5 is also deleted. सो रिमूव फंक्शन क्या कर रहा है? रिमूव फंक्शन इस वैल्यू को डिलीट कर रहा है. पॉप क्या कर रहा है? जो एलिमेंट इस इंडेक्स पे प्रेजेंट है उसको डिलीट कर रहा है. और पॉप विदाउट आर्गुमेंट क्या कर रहा है? लास्ट एलिमेंट को डिलीट कर रहा है. एक और फंक्शन होता है, दैट इज योर क्लियर फंक्शन, क्लियर मेथड. व्हाट दिस मेथड विल डू? Basically, this method is used to delete all the elements from the list. Delete all the elements from the list. So if you are having a list and you want to delete all the elements of that list, for that we are having clear function. So when I'm applying this clear function, all the elements, whatever elements are present in your list, all those elements will be deleted. See, at last your list is empty because जो भी एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट थे वो सारे डिलीट हो गए क्लियर फंक्शन के थ्रू. क्लियर फंक्शन क्या करा उसने? उसने जितने वेरिएबल थे इसके अंदर सब डिलीट. अब डिलीशन में कोई डाउट है तो पूछ. If any doubt is there in deletion, please let me know. Any question, any doubt you guys want to ask, please let me know. In deletion. Clear. Okay. Naman, is it clear or not? Clear, sir. Now after this, next one. How to mod, because insertion we have deleted, insertion we have done, deletion we have done. How to modify the element of the given list. So I am having a list. I want to modify some element.
So how we will do it? So suppose that my list is hi, comma bye, comma hello, comma Ram. Okay, this is my list. What is my requirement? I want to change this hello with Ayush or Anish. Okay, with Ansh. I want to change this hello with Ansh. So how we can modify this element? Very simple it is. You will write list name that is L. Within this bracket, you will give the index of your element. So what is the index of hello? कोई बता सकता है? क्या इंडेक्स है इस एलिमेंट का? 0, 1, 2. 2 is the index. So just write L of 2. And after this, your value. What is your updated value? My updated value is something like Anish. Just write. Bus. That is your updation. Now, what this code will do? This code will go at this position, and whatever value is present, that value will be replaced with Ansh. Whatever value is present, that value will be replaced with Ansh. See. See, hello is going to be modified with Ansh. So if you want to modify any element, this is a way to modify the element of the given list. Let me take one more example. One card is there. What I want is wherever 40 is present, I want to change this 40 with 400. How we will do? मुझे इस 40 को 400 में change करना. Everybody write this sentence. I want to change this 40 with 400. Everybody. लिखो code. I am waiting. I want to modify 40 with 400. That is one. Just modify this 40 with 400. How we will do? L of 3. Correct. Correct. Arnav. Okay. Simple code. First, see the index of 40. What is the index of 40? 0, 1, 2, 3. 3 index. So just write cart of 3. Cart of 3. And what is the value that I want? I want 400. Just write this. Now, if you are going to print your cart, you will see your 40 is going to be changed with 400. So in this way, you can modify the element of a given list. If you are having a list, you want to modify the element of that list. Yes, you can do with the help of this syntax. Huh? Any doubt? Any doubt in this? Clear, everybody? Okay. After this, if you want to sort the given list, sort the given list. So how we can sort the given list? So for example, I am having some list. This is my list. My requirement is just to sort this list, just to sort this list. How we will sort it? So for that, if you want to sort the given list, sorting means arrange the element of the list either in ascending order or in descending. Sort means you want to arrange the element of the given list either in ascending order or in descending. So how we will sort it? So simply you will call one function that is known as sort function. What it will do? It will sort the elements in ascending order. In ascending. Simply it will sort the element in ascending order. And after this, print your X. See. See, your elements has been
sorted in ascending order. Suppose that I want in descending order. My requirement is I want to sort in descending order. What I will do? Inside this sort function, you need to add one attribute that is known as reverse and make it as. Now, what it will do? It will sort your list element in descending descending order. See, if I am going to run this, your elements will be sorted in descending order. So if you want to sort the given list, one list is given, my objective is to sort that list. So how we will sort it? We will sort it with the help of sort function. So this function is used to sort the given element. Whatever elements are there, I want to sort that element either in ascending order or in descending order. We are having sort function. So this function is used to sort the given element in descending order, in ascending. If you want to sort in descending order, just make one variable reverse is equal to true. Okay, then it will sort in descending. Sort function is clear. कोई doubt है तो पूछ लो इसमें. कोई doubt है तो पूछ लो. Hmm. Any question in short function? In short function, if any question is there, please let. Okay, I hope it is. After this, we are having reverse of the given list. What is the meaning of this? Suppose that this is my list. My objective is to reverse this list. Complete list I want to reverse. How we will do it? For that, there is one function which is known as reverse. What this function will do? This function will reverse the given list. Whatever list is there, that complete list will be reversed. So if I am going to print my X value, your list will be the complete list has been reversed. Okay. So if you want to reverse the given list, for that we are having a method which is known as reverse. What this will do, this will simply reverse the element of the given list. Whatever list is there, if you want to reverse the element of that list, we are having reverse method, reverse. So if you want to reverse the given list, for that we are having reverse method. Okay, if you want to sort the given list, we are having sort method. Ask if any doubt is there, please let me know. If any doubt is there, please let me know. This is your reverse. How we can perform reverse of the given list. If any question, anything you guys want to ask, please let me know. Guys, response करो. At least एक लोग तो response करो. किसी का response नहीं आ रहा है. ठीक है, ऐसे मैं कवर करता जाऊंगा, फिर मुझे पता नहीं चलेगा ना कि क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा. अगर नहीं हो रहा है तो बताओ, मैं फिर और एफर्ट डालूं. ठीक है, एटलीस्ट आई नीड टू गेट रिस्पॉन्स. इफ नोबडी इज रिस्पॉन्डिंग, दैट इज नॉट गुड. Okay, you are here for learning purpose. You are spending 1 hour, so at least you need to learn few things. If you are not learning, then it is something like time wasting. So that will not help you, not help me as. So you are here for learning purpose. At least you can give response. There are 8 people are there, 7 people are there. Okay, at least they can give response whether it is correct or not. But in this way, I will go ahead. I don't know whether it is clear or not. Okay. Now, after this, we are having few operators that we can use with list. First operator is known as concatenation of, which is known as plus of. What this plus operator will do? This plus operator basically used to join two lists as a single list. What is the meaning of this? Suppose that I am having one list, 1, 2, 3, 4, 5, 6. This is my one list. Second list I am having 10, 20, 30, 40, 50. This is my second list. What is my objective? I want to join these two lists as a single list. I want to join these two lists as a single list. How we will do? So for that, we are having plus operator. And this process is known as concatenation. This process is known as concatenation. If you want to add the element of one list and if you want to add the element of one list and second list, we are using plus operator. Now, if you will see the result is
whatever elements are present in this and whatever elements are present in this list, both are concatenated together and one list will be generated as a concatenated list. So this is what? This is your concatenated list. Joining of two lists. So this is your concatenation of. Same as it is, we are having one more operator that is known as repetition of. Repetition operator that is known as star. What this will do, this will repeat the element of the given list. If you want to repeat the element of the given list, we are having the repetition operator. What it will do, whatever list is there, I want to repeat the element of this list three times. So L1 is what? L1 is my list. My objective is to repeat the element of this list three times. So if I am going to run this, you will see three times. One time this one, second time this one, and third time this. That means three times these elements, the element of the given list are repeated three times. So this is why this is known as a repetition operator. So repetition operator means whatever elements are given, you want to repeat those elements n number of times. N can be 3, can be 4, can be 5, and can be any number. And what will do, whatever elements are there, those elements are going to be repeated. If it is three times, then three times the element will be repeated. If five times the element will be repeated. Same as it is, one more operator is there that is known as membership operator. So membership operators are, in operators I have already discussed membership operator, in and not in. These are the two membership operator we are having. What it will do? It will check whether a given element is a member or not. If it is a member, you will get result as true. If it's not a member, you will get result as false. What is the meaning of that? See, I am writing 10 in L1. Whether this 10 is present in this L1, 10 is present in this L1, whether 10 is a part of this L1. The answer is no. 10 is not a part of this. 10 is not a member of this list. What is my result? False students. Because whatever element I have given, that element is not a part of this list. That's why your result is false. Same as it is, if I am writing something like 4 in L1, is it true or false? 4 is a part, 4 is a member of this list or not? 4 is a member of this list or not? Tell me guys. सर हम इसको रन नहीं कर रहे हैं 4 in L1. Yes, 4 is there in L1. What is my result? 2 is my result. Because 4 is a part of this list. The result will be okay. So this is your member. So what this membership operator is doing, it is just checking whether this element is a part of this given list or not. If it is a part of given list, your result will be true, else the result will be false. So these are the operators that we are using in case of list. Now, if any question is there, please let. अगर कोई doubt हो. सर अगर अपन यहाँ पे ट्रू की जगह फॉल्स और फॉल्स की जगह ट्रू डालते हैं तो जब ये रन होता तो ये खुद आंसर करेक्ट करके देता या फिर एरर आ जाती कहाँ पे? ये हैशटैग करके आपने डाली है ना 10 इन हम्म L1 में फॉल्स हम्म तो जब ये इसको अपन रन ये कमेंट्स हैं, ये एग्जीक्यूट नहीं होते हैं. जो हैश के साथ कंटेंट हम लोग लिखते हैं ना, वो एग्जीक्यूट नहीं होता है. दिस इज योर कमेंट. ठीक है. जो हैश के अलावा लिखा हुआ है ना, वो हमारा कोड है. जो भी हैश में लिखा है ना, वो हेडिंग्स बोली जाती है. तो उसको मैं सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए लिख रहा हूँ. ये एग्जीक्यूट नहीं होता है. आप कोई भी चीज हैश के साथ लिखते हो पाइथन के अंदर ना, ये कमेंट की तरह ट्रीट होती है, और कमेंट कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होता. तो जो मैंने ये फॉल्स लिखा है ना, ये कमेंट है. ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि इसका आउटपुट क्या होगा? फॉल्स. आप इसको रिमूव कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये तो मैंने सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए बता दिया कि फॉल्स इसका रिजल्ट होगा, इसका रिजल्ट क्यों. ठीक है. ये एग्जीक्यूट नहीं होता है. ओके फाइन. अब इसके बाद जो नेक्स्ट आता है हमारा, हाउ टू एक्सेस हाउ टू एक्सेस एन एलिमेंट ऑफ द लिस्ट.
what is the meaning of this? Suppose that I am having a list. I want to access the element of the given list. So there are two ways to access the element of the list. First way is known as indexing. So indexing means we can access only one element at a second. We are having slicing. What slicing will do? We can access more than one element. We can access more than one element at a okay. So these are the two things, two ways are there. With the help of that, we can access the element of the given list. What is the meaning of this? Try to understand. I am having a list. L is equal to 1, 2, 3, 4, 5. What I am writing? I am writing print L of something like 4. Now, what is the meaning of this? At the fourth index, L is what? L is my list. In this list, fourth index value I want. What is the fourth index value? 0, 1, 2, 3, 4. What is my result? 5 is my result. So what is this? This is your indexing. Indexing is what? I am trying to access the element with the help of indexes. This is your 4, which is index. At fourth index, 0, 1, 2, 3, 4. At fourth index, which element is present? 5. In 5 element is present. So 5 I am getting. Same as it is if I am writing L of 2. What result we will get, guys? क्या आएगा? अगर मैं 2 1. लिख रहा हूं तो yes, 0, 1, 2, 3 will be your answer. ओके सी इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है. जब 0 से हम स्टार्ट करेंगे तो ये 0 है, ये क्या है, ये हमारा 1 है, और ये क्या है, ये हमारा 2 है. तो हमें एल ऑफ 2 देखना है. 2 पे क्या प्रेजेंट है? 3 प्रेजेंट है. तो रिजल्ट क्या आएगा? ठीक है. सेम एज इट इज अगर मैं लिख रहा हूं एल ऑफ 1, क्या आएगा? 2. 2 आएगा. देखो ये 0 है, फिर उसके बाद क्या है? 1. 1 इंडेक्स पे क्या प्रेजेंट है? 2. और हमको चाहिए क्या? 1 इंडेक्स का एलिमेंट. 1 इंडेक्स पे क्या है? ठीक है. तो ये जो बोला जाता है ये फॉरवर्ड इंडेक्सिंग होती है. दैट मीन्स हम किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं? हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं और हम इस डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहे हैं. नाउ सेम एज इट इज वी आर हैविंग बैकवर्ड इंडेक्सिंग एज वेल. बैकवर्ड इंडेक्सिंग का मतलब क्या होता है? अगर जो इंडेक्स वैल्यू यहाँ पे दिए हुए हैं वो निगेटिव, तो निगेटिव के केस में हमारा स्टार्टिंग जो होता है वो होता है -1, और स्टार्ट जो होता है वो लास्ट एलिमेंट से, और इस डायरेक्शन में हम मूव करते हैं. डायरेक्शन हमारी बैकवर्ड रहती है, और फर्स्ट एलिमेंट जो रहता है वो -1. तो -1 ये है, देन ये 5 हमारा प्रेजेंट है -2 पे, देन -3, -4, -5, ऐसे ही बढ़ता चला जाए. ठीक है. तो अगर मैं इसका एक एग्जांपल लेता हूं, इफ आई एम राइटिंग ट्रेन एल ऑफ -1, व्हाट इज माय रिजल्ट? -1 पे कौन सा 6. एलिमेंट प्रेजेंट है? इट इज 6. बिकॉज सी बैकवर्ड डायरेक्शन, बिकॉज नेगेटिव सिंबल का मतलब क्या है? हमको इधर साइड में मूव करना. इधर साइड में -1 से इंडेक्सिंग स्टार्ट होती, तो ये 6 जो प्रेजेंट है किस इंडेक्स पे प्रेजेंट है? -1 पे. माइनस ये 5 कहाँ पे प्रेजेंट है? -2 पे प्रेजेंट है. ये 4 कहाँ पे है? -3 पे. देन ये 4 जो है, सॉरी, ये जो 3 है ये प्रेजेंट है -4 इंडेक्स पे, और ऐसे ही आगे चलते. तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? 6. ठीक है. अब इसके बाद अगर मैं लिखता हूं एल ऑफ समथिंग लाइक -4, क्या रिजल्ट आएगा? 3. करेक्ट. सी -1, -2, -3, -4, that is 3. 3 is present at, sorry, 3 is present at -. So 3 will be your. Now after this, मैं यहां लिख रहा हूं -2, क्या रिजल्ट है? 5. 5. तो ये जितना भी हम देख रहे हैं ना, ये बोला जाता है इंडेक्सिंग. अब ये इंडेक्सिंग क्यों है? क्योंकि इससे हम एक एलिमेंट सिर्फ एक्सेस कर. अगर तुम इसको देखोगे तो सारे में हमारा एक ही एलिमेंट एज अ रिजल्ट है, बट हमको मल्टीपल एलिमेंट, तो उसके लिए हम लोग स्लाइसिंग का यूज करते हैं. अगर हमको मल्टीपल एलिमेंट्स चाहिए, देन वी विल यूज स्लाइसिंग कॉन्सेप्ट. व्हाट स्लाइसिंग इज सेइंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड. प्रिंट
L विद इन स्क्वायर ब्रैकेट। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कहां से हमको स्टार्ट होना है, यू नीड टू राइट फ्रॉम वेयर आई वांट टू स्टार्ट, आई वांट टू स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट इंडेक्स। कहां तक हमको जाना है, आई एम राइटिंग 4। 4 का मतलब होगा कि ये 3 तक ही जाएगा, 4 एक्सक्लूसिव होता है, 4 इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद मैं स्टेप दे रहा हूं 1। ठीक है, स्टेप का मतलब यहाँ पे क्या है, स्टेप का मतलब यहाँ पे होता है कितने एलिमेंट हमको स्किप करने हैं। स्किप करने का मतलब क्या है, अगर मैंने 1 दिया, 1 मीन्स कोई एलिमेंट स्किप नहीं करना। गाइस गिव मी अ मोमेंट। या so here 1 means I don't want to skip any element. ओके, सेम एज इट इज इफ 2 इज देयर, अगर 2 है तो कितने एलिमेंट स्किप होंगे, 1 एलिमेंट स्किप। अगर 3 है तो कितने होंगे, 2 होगा। ठीक है, ऐसे एलिमेंट स्किप होंगे। अब यहाँ पे आ जाओ, मैं कहां से स्टार्ट कर रहा हूँ, 1 से। दैट मींस आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट इंडेक्स। व्हाट इज माय फर्स्ट इंडेक्स, 0 1 1, दिस इज माय फर्स्ट इंडेक्स। तो फ्रॉम हियर आई एम गोइंग टू स्टार्ट। आफ्टर दिस 4। 4 मीन्स हमको कहां तक जाना है, हमको जाना है 3 तक। सो 0 1 2 3, दैट मीन्स स्टॉप हमको यहाँ पे होना। तो हम स्टार्ट कहां से कर रहे हैं, फर्स्ट इंडेक्स से, 2 से। तो हमारा स्लाइसिंग का जो एरिया है वो है 2 3 4। अब इनके बीच में 1 स्टेप वैल्यू हमने दिया। 1 का मतलब है कि हमको कोई एलिमेंट स्किप नहीं करना है। अगर मैं कोई एलिमेंट स्किप नहीं करूंगा तो क्या रिजल्ट रहेगा, यही रिजल्ट रहेगा, दैट इज 2 3 4। अगर मैं इसको प्रिंट करता हूं तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 2 3 4। अगर मैं स्टेप वैल्यू को चेंज करता हूं, जिसको नहीं क्लियर हुआ, ठीक है, मैं स्टेप वैल्यू को अब चेंज करके दिखाता हूं। फॉर एग्जाम्पल आई एम राइटिंग, ठीक है, अब व्हाट रिजल्ट वी विल गेट, समझ। आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट मीन 0 1, फ्रॉम हियर आई एम स्टार्ट। 4 आई एम गोइंग टिल थर्ड इंडेक्स, 0 1 2 3, दैट मीन्स आई एम गोइंग टू स्टॉप। माई स्लाइसिंग एरिया विल बी 2 3 4, दिस इज माई स्लाइसिंग एरिया। अब समझना, हमको ये एरिया में 2 मीन्स एक एक एलिमेंट को स्किप करते चलना है। तो पहले तो 2 लेंगे, 2 ऐसे ही प्रिंट हो जाएगा। 2 के बाद हमको एक एलिमेंट स्किप करना है, तो ये 3 हमारा जो है स्किप हो जाएगा। 3 के बाद हमारा नेक्स्ट एलिमेंट आ जाएगा जो कि है 4, तो रिजल्ट क्या आएगा, 2, दैट इज यूज। सो जो स्टेप वैल्यू होगी उससे एक कम एलिमेंट हम स्किप करते हैं। अगर 2 है तो एक एलिमेंट स्किप करेंगे, अगर 5 है तो 4 एलिमेंट स्किप करेंगे, ऐसे चले। अगर 10 दिया हुआ है स्टेप वैल्यू तो 9 एलिमेंट स्किप करेंगे। ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 2 और 4, 2 एंड 4, सी। सेम एज इट इज, अगर मैं एग्जांपल लूं यहाँ पे, एक और एग्जांपल है। आई एम राइटिंग 2 टू 5 3, क्या रिजल्ट आएगा, कोई लोग बताओगे। What is the result of this? I am going to start from 2. I am going till 5 and my step value is 3. 3 means 2 elements I need to skip. C and C. Okay. Others? सर 2 और 3। 2, 2 1 3 को नहीं है। सर फिर क्या है। ओके, कोई ट्राई करेगा या मैं बताऊं। 3 and 6, Sir, ओके। 3 and 6. ठीक है, फाइन, लेट्स स्टार्ट। सी, Only three, sir. only 3, okay. We are starting from 2. 2 means 0 1. From here I need to start. From second index I must start. 5, 5 means 1 element, like 5 का मतलब है कि हम 4 तक ही जाएंगे। ठीक है, ये 5 इंक्लूड नहीं होता, जो भी एंड की वैल्यू होती है वो इंक्लूड नहीं होती है। दैट मीन्स वी विल गो टिल 4। 4 मीन्स 0 1 2 3, 0 1 2 3 4, दैट मीन्स हियर माय स्लाइसिंग एरिया इज 3 4 5, दिस इज आवर स्लाइसिंग एरिया। ओके, नाउ फर्स्ट 3 है तो पहला एलिमेंट हमेशा सेम एज इट इज प्रिंट हो जाता है, तो 3 तो हमारा प्रिंट होगा। उसके बाद 3, 3 मीन्स कितने एलिमेंट स्किप कर दे, 2 एलिमेंट स्किप कर दे। सो 4 विल बी स्किप, 5 विल बी स्किप। रिजल्ट क्या आएगा, सिर्फ 3 हमारा रिजल्ट, सिर्फ 3 हमारा रिजल्ट आएगा। बस ये है।
सर इसको एक बार और समझा दीजिए ना। बता रहा हूँ। ठीक है, देख, हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? हम स्टार्ट कर रहे हैं टू से। पहले ये देखा जाता है कि कहाँ से हमको स्लाइसिंग करनी है, तो स्लाइसिंग टू से करनी है। तो टू इंडेक्स कहाँ पे? 0 1 2, दैट मीन्स 3 से हमको स्टार्ट। ठीक है, कहाँ तक जाना है? 5। 5 से एक कम तक हम जाते हैं हमेशा। अगर 5 है तो वो 4 तक जाएगा। तो 0 1 2 3 4, दैट मीन्स यहाँ पे हमको स्टॉप। तो हमारा स्लाइसिंग एरिया क्या बन रहा है? 3 4 5, इतना हमारा स्लाइसिंग एरिया है। आप समझ लो, पहला जो एलिमेंट होता है वो सेम एज इट इज हमेशा प्रिंट। तो 3 तो हमारा सेम एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। अब 3 के बाद इसको बोला जाता है स्टेप। स्टेप का मतलब है कि कितने एलिमेंट हमको स्किप करने हैं। अगर स्टेप 3 है तो हमको 2 एलिमेंट स्किप करने हैं। जो भी स्टेप की वैल्यू होगी उससे एक कम एलिमेंट स्किप करने होते हैं। अगर 3 है तो 2 एलिमेंट स्किप करने होंगे। तो मैंने 3 तो सेम एज इट इज प्रिंट हो गया। 3 के बाद 2 एलिमेंट को हटा दो, तो पहला एलिमेंट तो ये हट जाएगा, दूसरा एलिमेंट ये है, हट जाएगा। तो क्या बचा? ओनली 3 हमारा जो है वो बचा, जो कि है। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? ओनली 3 इज योर। जिसको क्लियर नहीं हुआ, मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, फिर ट्राई करना है इस पे। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ चेंज कर रहा हूँ, एलिमेंट बढ़ा दे। ठीक है, जिसमें और ज्यादा आप लोगों को क्लियर। ठीक है, मैंने कितने एलिमेंट लिए? मैं क्या कर रहा हूँ, 5 लिया मैंने, फिर लिया। अब बताओ क्या है? एवरीबडी गिव अ ट्राई एंड टेल मी व्हाट इज द रिजल्ट। ट्राई करो। वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 1। पहले स्लाइसिंग एरिया देखना है कि मेरा स्लाइसिंग एरिया कितना है, कहाँ तक हमको स्लाइसिंग करनी है। फिर उसके बाद आगे बढ़ो, फिर स्टेप पे काम करूंगा। पहले स्लाइसिंग देखना, मेरे एलिमेंट कितने हैं जिसमें हमको स्लाइसिंग अप्लाई करनी है। हाँ, के ओनली 2 हम्म 5 9 के। सब लोग ट्राई करो गाइस, एटलीस्ट ट्राई करो, कुछ तो आएगा। फिर मैं बताता हूँ आप पे करूँगा। ठीक है, समझो। फ्रॉम वेयर आई एम स्टार्टिंग, दिस इज नोन एज स्टार्ट। सो फ्रॉम 1 आई एम स्टार्टिंग। तो व्हाट इज माई 1 इंडेक्स? 0 1। फ्रॉम हेयर आई एम स्टार्टिंग। ओके, from here I am starting. After this, ending is 5. 5 means I will stop at fourth index. What is my fourth index? 0 1 2 3 4. That means from here. My slicing area will be 2 3 4. दिस इज माई स्लाइसिंग एरिया। अब देखना, स्टेप क्या है? 4 है, तो पहला एलिमेंट तो सेम एज इट इज प्रिंट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद 4 का मतलब है हमको 3 एलिमेंट स्किप करना है। पहला एलिमेंट स्किप हुआ, दूसरा एलिमेंट स्किप हुआ, तीसरा एलिमेंट स्किप हुआ। रिजल्ट क्या बचा? स्लाइसिंग खत्म हो गई हमारी, इतनी स्लाइसिंग एरिया था। रिजल्ट क्या बचा? 2। दैट 2 विल बी रीजन। सो द आंसर फॉर दिस विल बी 2। द आंसर फॉर दिस विल बी 2, सी 2। चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिसको नहीं क्लियर हुआ है। हाँ, नाउ टेन व्हाट इज माई रिजल्ट। जिसको नहीं क्लियर हुआ इस एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाए। अब बताओ क्या है? एवरीबडी, सब लोग ट्राई करो और बताओ क्या रिजल्ट है इसका।
2468, 2468. Okay, let's see. We are starting from 1. Okay, so that means we are starting from this position. 9 means we will go till 8. 8 means 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. So we will stop it. Okay. My slicing area is 2, 3, 4, 5, then 6, then 7, then 8, and then 9. This is your slicing area. Okay. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Now, 2 मीन्स पहला एलिमेंट तो सेम एज इट इज प्रिंट होता है, तो 2 तो प्रिंट हो जाएगा। 2 के बाद कितने एलिमेंट स्किप करने हैं? 2 स्टेप वैल्यू दी गई। 2 का मतलब है एक एलिमेंट स्किप करना है। सो 3 हमारा स्किप हो जाएगा। 4 तो ऐसे ही प्रिंट हो जाएगा। फिर क्या होगा? एक और नेक्स्ट एलिमेंट स्किप हो जाएगा, तो ये स्किप हो जाएगा। फिर क्या होगा? 6 प्रिंट हो जाएगा सेम एज इट इज। 7 फिर स्किप हो जाएगा। फिर 8 सेम एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। फिर 9 स्किप हो जाएगा। रिजल्ट क्या बचा? 2, 4, 6, 8। बस इतना ही तुम्हारा रिजल्ट। तो मैं क्या कर रहा हूं? एक एक एलिमेंट स्किप करते चल रहा हूं, क्योंकि स्टेप की वैल्यू क्या है? 2 है। आंसर विल बी 2, 4, 6, 8। दैट विल बी 2, 4, 6, 8 विल बी योर आंसर। ठीक है, तो ये तुम्हारी स्लाइसिंग है। अब जिसको जिसको डाउट है वो डाउट पूछ लो, 5 मिनट है। जो भी डाउट आप लोगों को पूछने हो पूछ, एक एक करके। हाँ, बताओ डाउट सब लोग। Any type of doubt or any question in this, if you guys want to ask, please let me know. Indexing is you are trying to access one element, that is your indexing. Slicing means multiple elements. If you will see here, we are getting multiple elements as well. So if you want to get multiple elements, we are using slice. If you want to get single element, we are having this thing. Okay. Any question, any doubt? नमन कुछ पूछना है? No, sir. All clear, sir. ठीक है. Anybody, any kind of doubt you guys want to ask, you can please let me know. चलो एक और चीज छोटी सी देख लेते हैं, 4 मिनट है, तो लेट मी डिस्कस. I told you that list is mutable in nature. List is mutable in nature. So how I can give you a proof that list is mutable in nature? How we can prove it? So for that, what I will do is, first I am creating some list. 1, 2, 3, 4, 5. ठीक है, मैंने एक लिस्ट बनाई। मैं क्या करूंगा? इस लिस्ट के अंदर चेंज, पहले तो क्या करूंगा? मैं इस लिस्ट का मेमोरी लोकेशन चेक करूंगा कि इस लिस्ट का मेमोरी लोकेशन क्या है। तो कुछ मेमोरी लोकेशन होगा इस लिस्ट का। उसके बाद मैं क्या करूंगा? मैं इस लिस्ट को मॉडिफाई करूंगा। मॉडिफाई मैं अपेंड के थ्रू कर सकता हूँ, मॉडिफाई मैं किसी भी चीज के थ्रू कर सकता हूँ। मैंने अपेंड के थ्रू मॉडिफाई किया। मॉडिफाई का मतलब क्या? मैं एलिमेंट ऐड कर रहा हूँ। और क्या कर रहा हूं? मैं एक्सप्लिसिटली भी मॉडिफाई कर दे रहा हूँ। 0 को, मतलब इस 1 को मैं 100 में चेंज कर रहा हूँ। जो भी एलिमेंट 0 पोजीशन पे प्रेजेंट है उसको 100 में कन्वर्ट कर दे रहा हूं। ठीक है, वो भी मैं कर दे रहा हूँ। सो एल ऑफ 0, 0th इंडेक्स आई एम गोइंग टू चेंज विद 100। ठीक है, अब आफ्टर मॉडिफिकेशन मैं क्या करूंगा? मैं फिर मेमोरी लोकेशन चेक करूँ। तो अगर ये दो मेमोरी लोकेशन सेम आती है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये है कि जो भी ये चेंज मैं कर रहा हूं वो चेंज इस ओरिजिनल लिस्ट के अंदर हो रहा है। दैट मीन जो हमने ओरिजिनल लिस्ट बनाई है वो चेंजेबल इन नेचर। ठीक है, लेट मी रन। देखो, देखो दोनों के मेमोरी लोकेशन सेम है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हम जो भी यहाँ पे चेंज कर रहे हैं वो सारे चेंज हमारे कहाँ पे हो रहे हैं? वो सारे चेंज हमारे इस ओरिजिनल लिस्ट के अंदर हो रहे हैं। इसी का मतलब होता है म्यूटेबल। That means whatever changes I am doing, that changes is done in your original list only. Okay. And that is the meaning of changeable in nature. List is changeable in nature. Changeable means once you are creating a list, you can perform any kind of changes. So this is one change, this is second change, any kind of changes you can do in this. Okay. So this is it. So this is all about today. Any question कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो. Okay. I don't think any doubt is there.